ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ ਜਾਂ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕੌਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ, ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਪਨਾਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਪਾਂਸਰਸ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। मैं हर उस शख्स का तह दिल तो धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने तन मन धन करके इस कार्य लिए सहयोग दिता। मैं कीर्तन तबले ते जज साहबाना का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने अपना कीमती समा कढ़ के इस प्रोग्राम विच जजमेंट की सेवा की। मैं माण महसूस करती हाँ उस्ताद ताफू खान साहब, उस्ताद अकरम खान साहब, उस्ताद फजल कुरैशी जी जिन्होंने अपना कीमती समा कढ़ के इस फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन यूथ कीर्तन तबला कॉम्पीटिशन दे विच तबला कॉम्पीटिशन विच जज की भूमिका की सेवा निभाई। ਅਤੇ स्पैशली मैं उस्ताद फजल कुरैशी जी का बहुत ही धन्यवाद करती हाँ जिन्हों ने साडे नाल साडे कॉम्पीटिशन दे विच ओवरऑल बेस्ट स्टूडेंट नूं गुरु पूर्णिमा ते बुलाउण दा सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। मैं बहुत ही ज़्यादा बधाई दिंदी हाँ उस्ताद, टीचर्स जिन्होंने बच्चों को सिखाया और बच्चे पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने बहुत ही वधिया तरीके नाल गाया। इस करके मैं टीचर साहबान का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ, पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करती हाँ और बच्चों का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम दे विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। अंत विच मैं फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन यूथ कीर्तन तबला कॉम्पीटिशन के नाल हर एक शख्स का जिन्होंने इस नाल भरपूर सहयोग दिता उन्हों का बहुत ही धन्यवाद करती हाँ। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। I want to congratulate the Core Institute of Music on their International Kirtan and Tabla competition, the online competition, which, as you know, in this kind of environment is very important. This is a great initiative, so I really want to thank all the participants and most of all the volunteers who put all their time and energy and the sponsors who have given their money to make sure that this is an awesome experience this year. So wishing them all the best and hoping in the future we get back to a normal Kirtan competition. So good luck everyone and look forward to seeing the results. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ UK ਤਬਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you, Dr. Paramjeet Kaur. On behalf of Kaur Institute of Music, would like to thank all the volunteers who worked on this first time ever international online youth competition for Tabla and Kirtan 2020. This is the first time this has ever been done, and Kaur Institute of Music would like to give a big thank you to everyone who's taken part. That includes all the sponsors, all the children and adults who have entered the competition, including the parents who've helped support them, and also the ustads and teachers that have helped the children learn Kirtan or Tabla and have been able to help them take part in this competition and help prepare them. Without them, this competition will not happen. We'd like to also thank the judges who have supported this competition and helped choose the winners. First, I'd like to give the opportunity for Ustad Fazal Qureshi from Bombay in India to say a few words to the entrance of the Tabla competition first. Over to you now, Ustad Fazal Qureshi. Namaskar, Adab, hello, this is Fazal Qureshi, and I was one of the judges for the competition organized by KIM, Kaur Institute of Music. I'd like to first of all say thank you and congratulate KIM for organizing such a wonderful competition and inviting wide variety of performers, participants from all over the world, coming from India, coming from America, coming from Canada, and so much of hard work. And special thanks to Kaur herself for working so hard and making it happen. And this shows her dedication, her love towards the instrument, and also because I'm proud of her because she's also my student. She's learned from me, so I'm proud to sort of be part of this competition. And second of all, I'd like to congratulate and thank all the participants who participated in this competition. And I have heard such wonderful talent, such wonderful performances, such wonderful solos. And the one thing that I like very much is that you are not afraid to play some unusual tals, So I've heard youngsters, play 9 beats and 11 beats and 7.5 beats and stuff like that. I think this is amazing, that shows the confidence, that shows the dedication that you have towards the instrument. And please carry on, because I think that for me, as a judge, for me, you all are winners, because the kind of performance, the kind of dedication I see in you guys is amazing. So you all are performance, even if you don't win. But please remember, the difference between the person who has won and the person who has not won is hardly anything. As we say in Hindi, 19-20 ka farak hai. In some places, it is even 19.5 or 20. So it is such a close competition, that everyone is playing wonderful. So please, thank you from my side to you, and also Gurmeet Kaur for organizing this. And I'm so happy that I was part of this. And I would also like to announce that whoever wins, we would like to invite that person to come and perform at our Guru Purnima festival that happens every year in July, in memory of our father Ustad Allah Rakha, and it happens in Mumbai in
in July when the Guru Purnima happens. So it's every year, and there are various artists participating as well as attending, and Zakir Bhai is there. We are all there, encouraging and listening to everyone. So that's my wish, and I've told this to Kaur, and I hope she keeps it in mind. And let's hope next year Guru Purnima function happens, and if it happens, one of you who has won would definitely come and perform. So thank you and all the best to everyone. Please do well. Please do continue to put that hard work. Continue to be sincere to your talent and continue to do well and study with your gurus. And congratulations to all your gurus also who have taught you so well. So take care, and I'm happy to be part of this. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Ustad Fazal Qureshi, for your kind words and also your amazing offer which you've given to the winner of this competition to perform at a stage in Bombay. We're very grateful to you for doing that. Now I'm going to hand over to Ustad Tafur Khan Sahib, who would also like to say a few words for the children who entered this competition. Over to you now, Ustad Tafur Khan Sahib. सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आपका ताफुर खान। मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी बात करने लगा हूँ कि मेरी बेटी शागिर्द है, मेरी कौर गुरमीत, हम गुरमीत ही कहते हैं, वैसे गुरमीत कौर है। उसने जो ये स्टेप उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे, हर अच्छे बच्चों को और बड़ों को चांस दे रही है, उनका नाम, उनके प्राइज देने के लिए, उनकी गैरत बढ़ाने के लिए, ये उसने बहुत बड़ा काम किया। ये किसी के ज़हन में ऐसी बात नहीं आई। तो मुझे उसने जज मुकर्रर किया, कुछ बम्बे में से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, वो भी मेरे अपने हैं, हम सब एक ही कुछ हैं। बाकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई थोड़ी बहुत ही एक बीट्स की या एक गिनती में से एक मसलन 100 में से एक लफ्ज चला गया, 99 आ गया, तो उसकी कोई हैसियत नहीं, वो है 100 के बराबर ही। तो बात ये है कि मैंने 5-6 दिन से सुन रहा हूँ और सुन के ये अंदाजा लगाया कि सब ने बहुत अपनी जान मारी है, बड़ी गैरत की है। मैं सब की गैरत को सलाम करता हूँ, चाहे मुझसे छोटे हैं चाहे मुझसे बड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हर आदमी ने अगर ताल बजाया तो बहुत खूबसूरत बजाया, ऐसे मालूम है कि जैसे इजी बज रहा है। सब ने बेहतर काम किया। मेरे तक हो ना ये सारी बात, तो मैं तो अपनी तरफ से भी प्राइज आपको सबको दूं, जितनी आपने गैरत की है। मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो, आपने सब ने बेहतर बजाया। अगर कोई एक पॉइंट कोई कम हुआ है किसी बात से, किसी वजह से, आपके तबले की वजह से नहीं, आपकी बल्कि गैरत की वजह से और बढ़ा दिया कि ये जो बहुत अच्छा बजाया ना, इससे और अच्छा बजाए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बच्चों को प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी आपने गैरत की है, और मेरी तरफ से सबको सलाम। और ये कोई ना अपने दिल में दिल शिकनी वाली बात ना करे। गुरमीत कौर ने जो काम किया वो किसी आदमी ने नहीं किया। मैं भी इतनी देर हो गई देख रहा हूँ, किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे ये काम नहीं किया कि सबको सुन रही है और सबके लिए उसने मुझे मुकर्रर किया। मेरा भाई है फजल, मेरे भाई का बेटा है, वो है, और एक दो हैं, वो जो मुझे नाम नहीं याद रहा। सबको कुछ कैश भी मिलेगा तो या कुछ और भी मिलेगा, क्योंकि उसने, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। तो आपको मैं बहुत मुबारक देता हूँ, और सबसे बड़ी मुबारक गुरमीत को जिसने आप लोगों को इकट्ठा किया और मुझे भी बुला लिया। मैं इतना बिजी आदमी हूँ कि मैं आजकल तबला कम बजा रहा हूँ और म्यूजिक ज्यादा दे रहा हूँ। मुझे देखो कैसी मुसीबत पड़ी हुई है। बहुत अच्छा सबने बजाया।
تو کوئی بات رہ جائے تو دل میں نہیں رکھنی کہ ہمیں یہ نمبر کم ملا یا 2 نمبر. یہ انہوں نے اپنے ایک اپنی جو انہوں نے بنایا ہوا ہے سلسلہ وہ پورا انہوں نے کرنا ہے, ورنہ کوئی اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو ہے ہی نہیں. سیکنڈ تھرڈ والی تو بات ہی نہیں, سب ایک نمبر پہ جائے. السلام علیکم. Thank you very much, Ustad Tawfiq Khan Sahib, for your kind words. That's Ustad Tawfiq Khan Sahib from Lahore in Pakistan. Now, just before we go on to announce the names of the winners, we have one of our last, third judge, who would also like to say a few words to the entrants. This is Ustad Akram Khan from Delhi in India. They'd also like to say a few words to all the children and adults who entered the tabla competition. Over to you now, Ustad Akram Khan. نمسکار, آداب اور ست سری اکال آپ سب لوگوں کو. اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس بار بہت اچھے سے بچوں نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ لیا, اور اس کی مجھے بیسٹ وشیز کور انسٹیٹیوٹ آف میوزک کو دینی چاہیے. گرمیت جی نے بہت اچھا کام کیا ہے, اتنے سارے بچوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے, اور سبھی بچوں نے اپنی اپنی طرف سے بہت اچھا بجایا ہے, بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور جتنے بچوں نے اس بار پارٹیسپیٹ کیا ہے سب نے ہی بہت اچھا بجایا ہے. میں سب کو اپنی طرف سے بہت شبھ کامنائیں, بہت ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور دعائیں میری بیسٹ وشیز ہیں ان کے لیے. جتنے بھی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں اپنی طرف سے سب نے بہت اچھا کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ بچے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ سب لوگوں کے لیے ایک بار پھر میری بہت شبھ کامنائیں. جتنے بھی بچے ونر ہیں ان سب کو میری طرف سے, اور اسپیشلی ہمارے ججز کی طرف سے اور گرمیت جی کی طرف سے بہت بہت شبھ کامنائیں ہیں, بہت بدھائی ہے. بیسٹ وشز ٹو آل آف یو, اور ہم سب لوگوں کی بہت ان کو شبھ کامنائیں ہیں. اینڈ فائنلی مائی بیسٹ وشز ٹو آل دا پارٹیسپینٹس, آل دا ونرز. کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو. تھینک یو اینڈ بیسٹ وشز. نمسکار. So well done to all those winners for the Group 3 category, 15-20-year-olds. And again, the judges found this very hard to judge, and they had to issue joint prizes because of the high quality of the children's tabla talent. Now we're going to give a special award. This is a special award, appreciation award, to one person in this competition, and that is Shamraiz Roop Khan from Pakistan. They have won the special appreciation award for this competition. And again, the judges found this very hard to judge, and they had to issue joint prizes because of the high quality of the children's tabla talent. Now we're going to give a special award. This is a special award, appreciation award, to one person in this competition, and that is Shamraiz Roop Khan from Pakistan.